Good morning friends. With continuation of topic chemical reaction and equation, today I am going to discuss redox reaction with you. Redox reaction from part B, that is type of chemical reaction. First we see what do we mean by redox reaction. Red here suggests for reduction and ox here suggests for oxidation. Means combination of reduction and oxidation will generate redox reaction. The reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously. मीन्स एक सिंगल रिएक्शन में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है, दैट इज टर्म्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. Gain of oxygen is oxidation, loss of hydrogen is also oxidation, loss of electron also oxidation, increase in oxidation state also under in category of oxidation point. Second one is reduction. Reverse of oxidation process is reduction. Means in oxidation process oxygen का gain that is oxidation, loss of oxygen that is termed as reduction. अगर हाइड्रोजन लॉस होता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गेन होता है हम बोलते हैं रिडक्शन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी विल सी इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन हाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, increase in oxidation state is oxidation and decrease in oxidation state is reduction. Let's move on example. Mg here reacts with oxygen, formation of magnesium oxide as a desired product. We will see which one is oxidation reaction and which one is reduction reaction. Here देखिए मैग्नीशियम इज आवर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आवर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल. इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन means here addition of oxygen takes place. Addition of oxygen, that means oxidation. H2S react with chlorine, formation of HCl and sulfur. Here hydrogen will remove from the system and generation of HCl and formation of sulfur, that means removal of hydrogen takes place. It also comes in category of oxidation. Similarly, in the same way, here addition of hydrogen, that is reduction, and removal of oxygen, that is also reduction part. Let's see what is oxidizing agent and what is reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं. सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट को आप रिडक्टेंट बोल सकते हैं. ऑक्सीडेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीजन देता है और रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है. मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट विल वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड जिसका रिडक्शन होता है इट विल वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखिए कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. In this reaction, oxygen acts as an oxidizing agent. ऑक्सीजन ने किसका काम किया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. मीन्स ऑक्सीजन हैज द टेंडेंसी टू गिव ऑक्सीजन, दैट्स वाई इट विल वर्क्स एज ऑक्सीडेंट. सिमिलरली इन दिस रिएक्शन Cl2 plus H2 which gives 2 HCl. Here formation of HCl takes place. Cl2 works as oxidizing agent, hydrogen works as reducing agent. I have taken a note form that is very important. Oxygen works as oxidizing agent as it causes oxidation of another substance. Means किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसका पर्टिकुलर क्या फंक्शन होता है? it will have the tendency to oxidize another substance. Similarly, hydrogen and H2S, carbon dioxide works as reducing agent because they have the tendency to bring out reduction reaction. मीन्स किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट. ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वी सी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन what is the meaning of oxidation reaction in terms of electron. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से अब हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन कैसे कहेंगे. हेयर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल सोडियम. It will remove electron, means sodium has the tendency to liberate electron. Sodium के outermost electronic configuration 1 electron, that means it is a type of alkali metals. It has the tendency to remove this electron as it acquire the noble gas configuration. Formation of Na positive plus electron, that means sodium releases 1 electron from its outermost shell. That's why in terms of electron, loss of electron taking place, and these all are examples of oxidation reaction. Similarly, in reduction reaction, gain of electron takes place.
हेयर Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंबाइन विद पॉजिटिव मीन्स यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल कम्स आउट Ag. In the same way, Cl2 plus 2 electron and Cl2 combine with each other to form 2Cl minus, gain of electron, that is reduction process. Okay friends, let's see किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को आप रेडॉक्स कब कहेंगे. मीन्स आपके पास कोई एक आयनिक इक्वेशन है, आप उसको कैसे जज करेंगे वेदर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. देखिए स्टार्ट करते हैं. हेयर जिंक रिएक्ट विद कॉपर 2 प्लस आयन to form Zn2 plus copper. Here zinc is in its pure state and copper is in its plus 2 oxidation state. Zn is in plus 2 oxidation state and here in terms of product copper is in its native state. Zinc means zinc के पास 0 charge है, copper here plus 2 charge, zinc here plus 2 and copper here 0. Means how can we see this reaction in terms of oxidation number, which one is reduction and which one is oxidation. Zinc here 0 charge and here plus 2, that means increase in oxidation number from 0 to plus 2, that means oxidation number का बढ़ना. It is a process of oxidation. In terms of electron, electron के term में भी आप चेक कर सकते हैं. Zinc liberate 2 electrons, zinc ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, loss of electron is oxidation. Copper 2 plus gain 2 electron and that's why it is under the category of reduction. I have managed this complete reaction into half reaction. First is oxidation half reaction and second one is reduction half reaction. Oxidation zinc Zn2 plus 2 electron, that means loss of electron. Reduction half reaction copper gain 2 electron that are liberated from the zinc atom and formation of copper. Now with addition of 1 and 2 equation, zinc Zn2 plus 2 electron, I have highlighted these 2 electrons because in first reaction 2 electrons are in product side and in second reaction 2 electrons are on the right hand side, left hand side, you can say reactant side. They will cancel each other and generation of a particular new reaction, that is your permanent redox reaction. Zinc combined with Cu2 positive, formation of Zn2 plus copper. That's why oxidation and reduction takes place simultaneously. Zinc is oxidized and copper is reduced. Zinc in this reaction works as reductant and copper in this reaction works as a oxidizing agent. Okay friends, thank you very much. Hope so for you are getting well all these particular reactions. Share, like and subscribe. Thank you.